Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 4, and the name of this chapter is the Mughal Empire, and this portion is related to a history portion, as you can see. So, in this class, we are going to start question number E. We have done question number A, B, C, D, E in the previous, E. We are continuing from today's class. Question number A, B, C, D, we have done in the previous classes. So if you haven't done those questions, please go through the previous videos. Now, question number 1 of E, describe the conflict between Humayun and Shaisha. So we have done all the major Mughal emperors, or we can say the 6 major Mughal emperors of this Mughal dynasty. Now we are going through the conflictions between Humayun and Shaisha. For that, Humayun. The time period of Humayun is divided into two main parts, 1530 to 1540, 10 years, and after that 15 year का gap हो जाता है, and after that only 1 year. तो ये 1530 to 1556 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में, या फिर हम बात करें 1532 तक के टाइम पीरियड में, जहाँ से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में एक जंग चलती रही थी। भले ही हम बात करें 5 साल बाद शेर शाह की डेथ हो गई थी। So now what happened, or what do you mean by this confliction? So we are moving forward to now the questions. So Sher Shah Suri was a powerful Afghan noble who wanted to occupy Delhi and Agra. These two places he wanted to occupy. In the Battle of Chausa and in 1539 CE, means Common Era, Humayun troops were defeated by sudden attack of Sher Shah Suri's army. So in the Battle of Chausa and in the Battle of Kannauj, the Sheikh Shah Suri defeated the Mughal army, or we can say that Humayun. After that, later in Battle of Kannauj, the Mughal army was defeated again by Sheikh Shah. As here we can see that in Battle of Chausa and in Battle of Kannauj, both the wars, Sheikh Shah Suri was the winner, and Humayun was defeated. After that, what happened? Humayun saved his life by jumping into the river. Sheikh Shah Suri declared himself as the king of Delhi and Agra. तो हम इस बात से ये पता कर सकते हैं कि शेर शाह सूरी वॉज अ पावरफुल रूलर, एंड ही डिफीटेड हुमायूं नॉट वंस ट्वाइस। ओके, तो 2 बार वो हरा देते हैं, और इस वजह से जो हुमायूं है उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ता है, बाहर शरण लेनी पड़ती है। बशर्ते ये बात भी अलग है कि वो वापस भी आते हैं और अपनी डायनेस्टी को अपने अंडर भी ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what was the what was the result of the Deccan campaign of Akbar? So this portion we have done while we are covering the Akbar. So here you can see the portion of Akbar. Let me find this first of all. Yes, so here is Akbar. So Akbar ruled over around 49 years, and here are the two policies which Akbar, or we can say here are the two methods which Akbar followed. First is the direct conquest, and the second one is marriage alliances. And here we have done the campaign, Deccan campaign, which is done by Akbar. So what is in this campaign? So let's move forward to question number second again. Having consolidated his empire in North India, जैसे ही वो नॉर्थ इंडिया के सारे एम्पायर को अपने अंडर में करने के बाद, अकबर सेंड इज ऑफिशियल टू परसुएड द रूलर्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। इन तीनों एरियाज के को जीतने के लिए अकबर अपने रूलर्स को भेजते हैं। तो यहाँ पर उन्हें एक जो चांद बीबी नाम की एक लेडी होती है, हु वाज द क्वीन ऑफ अहमदनगर, वो उन्हें ब्रेव रेजिस्टेंस देती हैं, और इस वजह से उन लोगों के बीच में वॉर या कॉन्फ्लिक्शन चलते हैं। बट आफ्टर दैट अहमदनगर वाज अनेक्स्ड in 1596, Berar were annexed in 1601, and Khandesh was also annexed. So as we can see in the southern direction, or we can say साउथ इंडिया में भी अकबर की रूलिंग पावर एक्सपैंड हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ सुली कुल? अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, पर आप सही से लिखिएगा। This is an Arabic term literally meaning universal peace.
Akbar had this policy during his religion. It described a peaceful and harmonious relationship among different religions. It formed the basis of Akbar's policy of religious toleration. Now, when we are discussing about Aurangzeb, so we have done that. We have seen that औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स थे. ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर मुस्लिम थे, रूढ़िवादी थे. तो वो मुस्लिम एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते थे, उसी की एक्सपेंशन करना चाहते थे. बट अकबर क्या थे, रिलीजियस टॉलरे मतलब अकबर अकबर की पॉलिसीज़ में क्या दिखता था, हमें रिलीजियस टॉलरेशन दिखता था. कैसे, वो हर धर्म को इम्पोर्टेंस देते थे. तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि इस पॉइंट के अंदर हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, describe briefly Todamal's bandobast. Now, Raja Todamal was the Akbar's revenue minister, introduced a land revenue system which came to be known as Todamal's bandobast. अकबर के 9 रत्न थे, तो उनमें से एक थे टोडरमल, एंड ही वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर इन हिज एम्पायर, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस a revenue system that is known as Todamal's bandobast. Now, what is in this revenue system? अंडर द न्यू सिस्टम लैंड वॉज प्रॉपरली मेजर्ड. लैंड को प्रॉपरली मेजर किया जाता था पहले के ज़माने में, किसकी मदद से, एक रस्सी की मदद से. द रोप श्रंक व्हेन इट वाज ड्राई, स्ट्रेच व्हेन इट वाज वेट, हेंस द मेजरमेंट्स वाज taken. Now, what do you mean by this proportion? So, in this proportion, एक रोप है जिससे नापा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द फील्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो रोप है वो श्रंक नहीं होगी या वो स्ट्रेच नहीं होगी. तो इस वजह से जो मेजरमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं आ सकती थी, क्योंकि एक रोप है वो खींचती भी है. तो जब आपने नाप ले लिया तो नाप थोड़ी खींचेगा, वो जो लैंड सरफेस एरिया है वो तो उतना का उतना ही रहेगा. सो दैट्स वाई ये जो बंदोबस्त सिस्टम था उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे. नाउ व्हाट डज द अकबरनामा कंटेन, उसके अंदर क्या था. सो अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल, वन ऑफ द अकबर्स क्लोज फ्रेंड एंड courtiers, wrote the 3 volume history of the release of Akbar. It was titled as अकबरनामा. उस बुक का नाम क्या था, अकबरनामा. इसकी फर्स्ट वॉल्यूम जो है deal with Akbar's ancestor and the second volume recorded of events of Akbar's. पहले में उनके ancestor जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताया गया है. आफ्टर दैट अकबर की रीजंस के बारे में. आइन अकबर इज द 3rd वॉल्यूम. इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके बारे में बताया गया है. हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, जोग्राफी, कैसी उनके लैंड सरफेस एरिया थे, कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, स्ट्रेच थे, ट्रेडिशन, कल्चर, and Aine Akbari rich statistical details about the thing diverse as crop yield, prices, wages and revenue. All these details are fully incorporated or fully contained in Aine sorry Akbarnama. 3 वॉल्यूम है, तीनों वॉल्यूम में अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव, बाय दिस क्वेश्चन वी हैव completed question number E. What you have to do, you have to do question number E, question all the 5 questions in your history copy and send it to me. If you have any confusion in any description, you can ask. Thank you.